So today we'll learn about Jenkins. Okay, so what is Jenkins? Any idea? Uh, any idea about CI/CD pipelines, CI/CD things? Any idea on this? Continuous integration, continuous deployment. Any idea on this? DevOps. Any raw idea? Vanilla. My screen is visible. Okay. So, see, try to understand the things, uh, how the process, how the ideal process works. Okay, so era of continuous testing, okay, continuous deployment things. I mean, I am sure you have heard about these terminologies, right? Continuous integration and continuous deployment, these kind of things. CI/CD in short, it is called CI/CD. Okay, and also it is called DevOps. DevOps. What is Dev? There are two parts. One is Dev, and another is Ops. Dev means development. Development includes development and testing. Okay, development includes development and testing. Okay, development and testing, or also that maintenance, everything is coming under development. Okay, this will be called as or termed as dev. Hmm. And what is ops? Ops is kind of it's kind of operations means now development, I mean, apart from development there are some other works also in the project, right? Like environment creation, right? Build deployment, okay, where to deploy, creating the environment, like this is your test environment, this is your development environment, this is your test environment, this is your little higher environment which will be, let's say, we can say it's SCPQA or a higher environment staging, and after staging it would be pre-prod, then it would be production environment, right? So the code does not deploy, I mean, we do not deploy code directly to the production. There are certain things, certain environments we first deploy on those lower environments and test it. Okay, in several phases we will test that code, test that development code and application. Once we are passing all the phases of testing, it will be deployed to production. Got it? It will be deployed to production. So all these things means that environment creation, starting from environment creation, deployment, so all these things comes under ops. Okay, ops means operations. Okay, apart from development there are some certain other things also which are called ops or operations. Okay, so this when these development and operations come together and collaborate to each other, that is the point of success. I mean, that is the success point of your application. Okay, only dev can't handle the whole thing. Whole means it cannot create the application, okay, alone. Only ops can't create the application alone, okay, the working application alone. So we need both development and testing, I mean devs, and as well as ops.
Okay, so these two together will be called as DevOps. Okay, these two together will be called as DevOps. Hmm? DevOps, right? Now see how I'm talking about the continuous integration, continuous deployment. How the things works. Let's see how the things works. See, so it starts with what? Requirement gathering, right? Anything will be starting with requirement gathering, correct? So requirement will be gathered in let's say Jira or some other tools. Hmm? Let's say this is my Jira. Hmm? Here we have gathered the requirement, okay, in any form. It could be either a scenario form like BDD form, cucumber BDD form, or in plain text form, right? We have several proformas. Now these requirements will be high level requirements, right? And these requirements will be further analyzed to a low level requirement, or in the test case level requirement, you can say. Huh? So what developer will do? Developer will write the unit test cases. Unit test cases means unit test cases are the low level technical requirements, actually the low level technical requirements. It could be at the rate test, using at the rate test annotation, JUnit test annotation, they have written it. Okay, so they have created the tests. Okay, and what tester will do? Tester will create the functional test cases. Okay, tester will create the functional test cases. Okay, here is also it is at the rate test, automated as well as manual. So what will happen when developer will run the test cases? It will all fail. Okay, all the test cases are failed because you have not implemented the code. Now slowly you are starting your development. Okay, and one by one your test case is getting passed. Okay, one by one your developers test case is getting passed, right? So when all the test cases are passed, that is the development development end point or exit criteria. Then what it will they will do? They will deploy the code. They will deploy the code in, let's say, QA environment. Okay, they will deploy the code in QA environment. Now what tester will do in QA environment? They will run these functional test cases. These are all functional test cases. Okay, these are all functional tests. Okay, these functional tests will be ran on top of this QA environment, right? Now once this QA environment means all the tests are passed, this code, okay, this is, suppose, let's say this is QA2, okay, or QA environment, okay. This environment will be then deployed to a higher environment. Let's say this is staging. Okay, let's say this is staging. Staging environment. Okay, now in staging environment also a part of functional tests and regression test would be executed. Okay, a part of functional test would be executed, or part of functional test means as a regression test will execute, and also will make sure that new deployment is working fine, correct, in the staging. Now when all the test cases are passed, or all the test cases, everything is fine,
This code, staging code, will be deployed to where a higher environment, maybe it could be a pre-prod environment, pre-prod environment. Okay, it could be a pre-prod environment, pre-prod environment. And the same thing, same, I mean, that regression things will be executed in the pre-prod also by the testers. And after all the test cases are passed, this code will be deployed to the production. This code will be deployed to the production or prod environment. Okay, prod environment. So this is the continuous integration process. Okay, continuous integration. Continuous integration means continuously you are integrating the code. Okay, continuously you are integrating the code, and the same cycle you are continuously you are deploying the code in different environments. Okay, continuously you are deploying the codes in different environments and testing it continuously, and after that you are continuously merging the code to the prod environment, right? So this is actually the model of incremental model. Okay, incremental development model, or you can say in agile also we can follow the same thing, right? We can follow the same thing, as most of the projects are using agile nowadays. Any big project, not a small project, any big or medium sized project is nowadays either they are using incremental model or agile model, right? So those models can be implemented in automated way or continuous integration and continuous deployment process like this. Okay, which is called CI/CD. Okay, CI/CD. So CI/CD is continuous integration, continuous deployment. Okay, this is the whole CI/CD process. Now, to achieve CI/CD process, we need certain automation tool. Okay, like for continuous test running, right? For continuous test running we need Jenkins. Okay, um, let's say for what I say, for where to run, right? The test cases where to run. So those environments we need. Okay, continuously. This QA, staging, pre-prod, these environments should be created. Okay, environment means what? These are all machines, alag machines, right? Different systems, virtual systems, and these systems are created by what? These are all virtual systems. Okay, not the physical machine. No one uses physical machine right now. So they use either cloud service providers like AWS EC2 systems, or let's say Google Cloud. This kind of cloud VMs they are using. Okay. Correct. So for that we need different things, like we can have Docker container, we can have Kubernetes, right? AWS code I've already discussed, right? So these kind of things we need. Okay, suppose for deployment, आपके पास you have now the environments, now you have to deploy the code, right? To deploy the code we have a couple of tools, like Ansible is one of them. Ansible. Okay, to automate the process of deployment we need Ansible, and Ansible will work with some
some automation tool. Okay, automation tool. Okay, continuous integration automation tool. One of the continuous integration tool or CI/CD tool is called Jenkins. Okay, this one of the tool is called Jenkins. We, the testers, often use these Jenkins jobs or Jenkins to automate our automation. To automate our automation. What I'm meaning by automate our automation is we have created our automation scripts. Now what we are doing, we are just running it locally, and every time I am changing test data and clicking on the run button. So I need something which will take care of this running automatically. Okay, take care of this running the jobs automatically. Suppose in a span of once in a day, once in a week, suppose you have some cron jobs that should be ran once in a day, right, to generate some reports. So for those things we need some continuous integration tools. Okay, continuous integration automation tools. One of them is Jenkins. Why I am mentioning Jenkins? Jenkins is an open source. I mean it has it has paid version also. I mean your organization will use that paid version only, but we, for a POC purpose or something like that, for a educational purpose, we can use, or you can use Jenkins on our local. Okay, as a free tool. What else we have as a CI/CD tool or CI/CD pipe continuous integration, continuous deployment automation tool? One of them is Bamboo. Okay, one of them is Bamboo. Bamboo is basically from or maintained by Atlassian. Okay, Bamboo is just right, what is Confluence. Jira is also from Atlassian. Right now they have, Atlassian is maintaining Jira. Confluence is for your documentation purpose, online documentation purpose. Bamboo is one of the tool. Git, what is that? The Bitbucket. Bitbucket is for, just like we have our GitHub, right? We are storing our data in GitHub, or we are storing our code in GitHub. Bitbucket is another tool. Okay, it's not open source, but Bitbucket is also a Git client. Like GitHub is a Git client. Bitbucket is also a Git client. Okay, so it is maintained by Atlassian. Like GitHub is basically from Microsoft. Okay, right now Microsoft is maintaining GitHub. Same way, we have some other this kind of tools also, like Azure has one tool, one provision to create pipeline, create this continuous integration, continuous development tool. Okay, so understood, right? What is Jira? So what is Jenkins? Jenkins will be used, or we will use Jenkins. Everything other will be taken care by the ops person. Okay, like deployment, everything will be taken care by ops person. Okay, but as a dev, you will be required to either create Jenkins pipeline or Jenkins standalone job to run your automation script. So what Jenkins job will do, it will fetch your code from your GitHub repository, and it will run on top of where it is deployed, that Jenkins is deployed, or in other servers.
For other server you need some more configurations, but now we'll only see how to um, create Jenkins job and all. Okay. Hmm. Correct. Yes. Right. Automation. Automation script. Hmm. Right. Hmm. Yes. Not only test code but development code also. Any code it will run. Not only unit test cases also, functional test cases also, as well as it can build the code. So for your, for the application, right? So application, how application is deployed? I mean, what is the whole code system is deployed in the in your environment? No, they have one archive file, right? Suppose for Java, it's a jar file. That jar file, they will create one jar file, and that jar file will be deployed to QA, and that jar file will be deployed to staging, that jar file will be deployed to pre-prod. Only thing they will refer different databases, right? Correct. Hmm. 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 Right. 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 What is, that build, right? When you are saying the build, what is that build? Any idea what is that build? That is somehow a form of code, right? That code is basically some archive file. For Java, it's jar file, Java archive. Jar, full form of jar is Java archive file. Okay, so that file will be deployed. That file, jar file, will have all the classes information, all the all the methods, all everything, interfaces, whatever you have written, that will have on that particular jar file. Okay, and that will refer the different databases. Okay, based on the environment, they will, backend would be the different. Okay, backend would be the different. Like for staging, there is one separate database. For pre-prod, there is one separate database. For prod, there is a prod database, right? Prod database. So all these things, correct. This is how the overall deployment, the software engineering process works. This architecture level knowledge is very necessary, by the way. Otherwise you won't understand what we are doing. We have, manager बोल रहा है आके QA में टेस्ट करो, आके बोल रहा है
staging में test करो, same testing you have to run in pre-prod. What is the difference between this? Will not understand, right? So these architectural things should be very clear. Now this deployment would be in three stages. First is your database related deployment, because there are some PLSQL things, right? Not only the database, not only the data you can have PLSQL things that you have to deploy. Then suppose you have some front end that you have to deploy. Suppose React.js you have used for front end, or you have used the normal HTML, CSS, JavaScript. Both are fine, but you have to deploy those things: front end and back end development deployment, and also your that database related things, PLSQL things you have to deploy. So all those codes will be those codes are not in your local. Many people, there are 5 developers for PLSQL, there are 5 developers for your front end things, there are 5 developers for your back end, means Java developers are there. So they will merge their code. How they will merge their code, right? They will merge their code in GitHub or Bitbucket, whatever, Git client. Okay, and that ultimate Git client, the same repository cannot take other languages, right? Other types, like PLSQL repository cannot take Java repository cannot take any kind of JavaScript or React.js or HTML, CSS things. So you have different repos. From these 3 repos, or from these repos, you will have to deploy the code, or push the code into the different environments, right? So for that you need one archive file. For PLSQL you need one archive file. For Java you need one archive file. For React.js or JavaScript, CSS, HTML, you need one archive file. So all these archive file will be stay, and then there will be one job to start the QA environment, right? Like we are starting this using MVN Spring Boot run, right? So the same kind of commands will be there in the QA environment. Why I'm saying environment is what? It's just another machine, another system, correct? So there also you have to run the application, otherwise your application won't be up and running. So all these things will be taken care by Jenkins. Okay, so all this build process will be taken care by Jenkins. ठीक है, understood? Okay. तो जेनकिंस क्या है? आप जेनकिंस का जगह है क्या सिस्टम में? स्लो चल रहा है, फास्ट चल रहा है, क्या है? नॉर्मल चल रहा है, क्या है, कैसा है जेनकिंस? डिप्लॉय करो जेनकिंस, डिप्लॉय करो, डिप्लॉय इट, अदरवाइज सीखोगे नहीं. मशीन ख़राब हो रहा है, होने दो, यू कैन टेक इट, but right now okay. So Jenkins download, यहाँ पे जाओ, डाउनलोड एंड डिप्लॉय jenkins.io. ये जो LTS मीन्स लॉन्ग टर्म सर्विस, ओके, 2.4.6, राइट? जेनरिक जावा, ओके. सो
You are running in Windows, right? So you have to click on Windows. विंडोज़ में क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे जेनकिंस आईओ डॉट डाउनलोड यहाँ पे क्लिक करो विंडोज़ में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा ये मेरे पास भी डाउनलोड हो गया हाँ विंडोज़ पे क्लिक करो एक EXE फाइल डाउनलोड होगा शेयर योर स्क्रीन एनीवन MSI, okay, MSI, yes, MSI. Go there. Next. Click on next. Okay, click on next. हाँ run service as local system okay local or domain user हाँ run system service as local system करो हाँ next port is 8080 that is fine okay your port is occupied right or somehow हाँ click on test port okay 8080 is there next 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 click on next click on install ये देखो वो पागल हो रहा है let it be installed yes I'm not I'm not getting that view actually maybe if it is yes I mean if you are getting that yes option okay finish okay now go to your browser and search localhost 8080 एक टैब ओपन करो नया टैब ओपन करो लोकल होस्ट 8080 वहाँ पे गूगल नहीं एकदम बार में जाके सर्च करो लोकल होस्ट 8080 हाँ :88 ये जेनकिंस का पोर्ट है ठीक है now you are getting this Jenkins now wait you will be having one administrative password okay administrator password so where it is C program data जाओ C program data Jenkins देखो Jenkins में .jenkins and secrets initial admin password C program data
जेनकिंस कंटिन्यू डॉट जेनकिंस करके फोल्डर है। डॉट जेनकिंस वो हिडन फोल्डर है, वो अनहाइड करो, अनहाइड करके दिखने को मिलेगा। व्यू में जाओ, वो देखो ऊपर व्यू एक ऑप्शन है ऊपर। नहीं नहीं वो नहीं, वो नहीं, वो ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर व्यू एक ऑप्शन है जहाँ पे होम शेयर एंड व्यू है ना। यहाँ पे देखो कुछ तो होगा। हाँ हिडन आइटम्स, इसको चेक करो ना। ये देखो, नहीं नहीं वो नहीं, देखो नीचे 3 आइटम, आइटम चेक, चेक बॉक्सेस, फाइल नेम, एक्सटेंशन, हिडन आइटम्स। हाँ हिडन आइटम्स को चेक करो, वो सारे चेक मत करो, सिर्फ हिडन आइटम्स को। डॉट जेनकिंस करके कुछ आया है क्या? नहीं, ये यू आर लुकिंग एट द रॉन्ग फोल्डर। सी में जाओ, सी में देखो प्रोग्राम डेटा करके कुछ है, लोकेशन ओपन करो ना, प्रोग्राम। हाँ प्रोग्राम डेटा। हाँ यहाँ पे देखो डॉट जेनकिंस, हाँ इसके अंदर देखो इनिशियल से क्या है, कुछ जेनकिंस सीक्रेट है ना, सीक्रेट्स। हाँ यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला, उसको ओपन करो। हाँ नोट पैड में, वो डबल क्लिक मत करो, राइट क्लिक करके ओपन करो यूजिंग नोट पैड। यस, दिस इज़ द पासवर्ड। फाइल को क्लोज कर दो। नाउ कंटिन्यू, क्लिक ऑन कंटिन्यू। इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन। हाँ ये इंस्टॉल होने दो, हाँ सब एक 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 करके। वो होने दो, ग्रीन कलर सब कुछ होने दो।
पाइपलाइन फेल हुआ है आपका, लेट्स सी। Okay, can you please click on retry? Just click on retry. Yes, there are two things, right? Pipeline build step and pipeline, these are two failed. ah. Now you create one username. This will be your login username password. हाँ, एनीथिंग याद रहे, ऐसा बार बार चेंज मत करो। पासवर्ड भी चेंज करने वाला नहीं, कुछ भी लालू भुलू टाइप का पासवर्ड डाल दो। सेव एंड कंटिन्यू। क्या है, नीचे आ जाओ, नीचे है और भी। हाँ, यहाँ पे ईमेल एड्रेस दो अपना। हाँ, तो लोकल होस्ट 8080, दैट इज फाइन। सेव एंड फिनिश। स्टार्ट यूजिंग जेनकिंस। वैनिला तुम कर रहे हो ना, यू आर ऑल्सो डूइंग, राइट? क्लिक ऑन स्टार्ट यूजिंग जेनकिंस। ओके, फाइन। हाँ, नाउ यू गो टू गिटहब। ओके, गो टू गिटहब फर्स्ट। नहीं, गिटहब ओपन करो, एक अलग टैब में गिटहब ओपन करो। ओके, आप लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया क्या वो जो अपने पास सेरेनिटी का प्रोजेक्ट था, मेल में जाके वो एक्सेप्ट करो ना, रूपाली। तो गो एंड एक्सेप्ट दैट रिक्वेस्ट। आई मीन, आई हैव गिवन द एक्सेस, राइट? चलेगा।
Yes, and share your screen. Vanilla, you just share your screen. Yep. You have that Serenity August batch, right? Correct. Okay. Now go to settings. सेटिंग्स मतलब यहाँ पे ऊपर जो कॉर्नर पे आपका नाम है ना, राइट साइड कॉर्नर. यस. नाउ गो टू, हाँ, सेटिंग्स. गो टू सेटिंग्स. देयर नीचे आओ, डेवलपर ऑप्शन करके कुछ होगा. हाँ, डेवलपर सेटिंग्स. क्रिएट अ न्यू पर्सनल एक्सेस टोकन. क्लिक ऑन पर्सनल एक्सेस टोकन्स. हाँ, वो क्लासिक वाला चलेगा. जेनरेट न्यू टोकन. बीटा मत करो, क्लासिक वाला करो. पासवर्ड डालो गिटहब का. फॉरगॉट पासवर्ड कर लो. वही सिलेक्ट करो ना उसको. ये करो, वो जो है उसको सिलेक्ट करो ना. नहीं, वो तुम पासवर्ड जैसे ही टाइप, ये देखो, ये सिलेक्ट करो, कंफर्म. हाँ, अभी ये कुछ नोट दे दो, कुछ वैनिला टोकन करके दे दो. हाँ, यहाँ पे ये रेपो में सिलेक्ट करो, रेपो. और कुछ नहीं चाहिए. नीचे आ जाओ, जनरेट टोकन करो. ओके, ये टोकन को कॉपी करके कहीं पे रखो, नोटपैड समवेयर. ठीक है. नाउ गो टू योर जेनकिंस. अच्छा, क्लिक ऑन न्यू आइटम. यहाँ पे एक नाम दो, कुछ जॉब का नाम होगा ऐसा, अच्छा खासा नाम दो. एक न्यू जॉब और फर्स्ट जॉब, ऐसा कुछ नाम दो. क्लिक ऑन फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट. फ्री स्टाइल में क्लिक करो और ओके करो. ओके. ओके. यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ डाल दो, टेक्स्ट वगैरह. हाँ, नीचे आ जाओ. नीचे नहीं, गिटहब प्रोजेक्ट नहीं, वो गिट सिलेक्ट करो. सोर्स कोड मैनेजमेंट गिट सिलेक्ट करो. अभी यहाँ पे देखो, क्रेडेंशियल्स में हमें डालना पड़ेगा. यहाँ पे ऐड करो, पहले ऐड जेनकिंस. इसको बोलते हैं जेनकिंस क्रेडेंशियल्स. यूज़र नेम विथ पासवर्ड. ओके, इट वुड बी यूज़र नेम विथ पासवर्ड. ओके, यूज़र नेम डालो तुम्हारा गिटहब का जो यूज़र नेम, गलती मत करो. हाँ, गिटहब का जो यूज़र नेम. हाँ, पासवर्ड में वो टोकन डालो. ठीक है. नीचे आ जाओ, सेव करो, उसको ऐड करो. ओके. नाउ गो टू योर रिपोजिटरी. वो जो सेरेनिटी बीडीटी का जो रिपोजिटरी है वहाँ पे जाओ, गिटहब में जाओ. हाँ, गिटहब में जाके वो सेरेनिटी बीडीटी का जो है ना, वो जो रेपो यूआरएल, उसको लो, कोड में जाओ, क्लिक ऑन कोड. एसएसएच को सिलेक्ट करो. हाँ, इसको कॉपी करो, कॉपी इट.
गो टू जेनकिंस अगेन, वहाँ पे रिपोजिटरी यूआरएल में वो डालो। हाँ, अभी क्रेडेंशियल्स में वो जो तुम नया डाले वो उसको सिलेक्ट करो, ड्रॉप डाउन में क्लिक करो, देखो आ गया। ठीक है, बाहर कहीं पे क्लिक करो, इट शुड, ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, फेल टू कनेक्ट टू रिपोजिटरी, गेट रिमोट, ये क्रेडेंशियल्स बड़बड़ है ना। ओके, अच्छा, रिपोजिटरी यूआरएल में ये करके देखो, वो एसएसएच की जगह एचटीटीपी करके देखो, एचटीटीपीएस, इसको कॉपी करो, देखो ये एरर मैसेज जाना चाहिए, अदरवाइज योर क्रेडेंशियल्स आर प्रॉब्लमेटिक, क्रेडेंशियल्स आर नॉट करेक्ट। फिर से सिलेक्ट करो, हाँ, गया ना, ओके फाइन। नाउ नीचे आ जाओ, अच्छा दिस इज़ योर मास्टर ब्रांच, अच्छा नीचे आ जाओ, हाँ बिल्ड ट्रिगर इज़ वो बाद में देखेंगे, नीचे आ जाओ, बिल्ड एनवायरनमेंट ज़रूरत नहीं है, बिल्ड स्टेप में आ जाओ, बिल्ड स्टेप, ऐड बिल्ड स्टेप, ओके। नाउ एग्जीक्यूट शेल, ओके। यहाँ पे डायरेक्टली एक ls कमांड डालो, ls कमांड, ओनली ls। यहाँ पे इसको अप्लाई एंड सेव करो, एंड सेव। नाउ यू बिल्ड द प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन बिल्ड नाउ, क्लिक ऑन बिल्ड नाउ, हाँ रुको 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 रुको, हाँ वर्कस्पेस है ना, वर्कस्पेस में डॉट गेट वगैरह आ रहा है ना, रुको ज़रा, वो पेंडिंग है, अभी आएगा। क्या है ये, फेल क्यों हुआ देखो, कंसोल आउटपुट, हाँ नीचे आ जाओ, क्या प्रॉब्लम है देखो, क्रिएट क्या बोल रहा है, कमांड एग्जीक्यूशन फेल, नीचे आ जाओ, ऊपर कैन नॉट रन प्रोग्राम SH, उसमें क्या डाले हो, LAC डाले ना, देखो एक बार देख लो, कॉन्फ़िगर में जाओ, कॉन्फ़िगर, नीचे आ जाओ, ओके जस्ट वेट, एक सेकेंड देखता हूँ, so everything is fine, ls कमांड फेल हो रहा है एग्जीक्यूट में, ओके। वर्कस्पेस में क्या क्या आया है, वर्कस्पेस में डायरेक्ट, नहीं वो देख रहे थे ना वर्कस्पेस, हाँ बाहर जाओ, बाहर जाके वो बिल्ड में जाके दिखेगा, एक बिल्ड में क्लिक करो फर्स्ट, कोई भी बिल्ड, हाँ एक बिल्ड के अंदर जाओ एंड क्लिक ऑन वर्कस्पेस, कुछ है क्या वर्कस्पेस, कुछ आया है, नहीं कंसोल आउटपुट नहीं, डिलीट बिल्ड नहीं है, अच्छा ठीक है,
और एक बार कंसोल आउटपुट में जाओ, दिखाओ ज़रा क्या है एग्जैक्ट .git.exe, that is fine. Initial commit for Serenity framework, fine. नीचे आ जाओ. हाँ, wait, create process IO exception, the system cannot find the file specified. Okay, cannot run program sh in directory Jenkins, first Jenkins job create, the system cannot find the file specified. Okay. शेल फाइल को ले नहीं रहा है somehow. Okay. Do one thing. Go to that job. Okay, configure में जाओ. कॉन्फ़िगर एंड वो बिल्ड स्टेप जो है उसको डिलीट करो. बिल्ड स्टेप जो है उसको डिलीट करो. वो एग्जीक्यूट शेल नहीं होगा उसका, क्योंकि तुम्हारा तो विंडोज़ है, विंडोज़ में कर रहे हो. ऐड बिल्ड स्टेप. अच्छा वेट, हाँ, विंडोज़ बैच कमांड, एग्जीक्यूट विंडोज़ बैच कमांड. ओके, यहाँ पे ls टाइप करो. ओके, नाउ अप्लाई एंड सेव. Now run it. Build now. अभी देखो क्या प्रॉब्लम है. नीचे आ जाओ. ls is not recognizable as internal or external command. और क्या क्या ऑप्शन है देखो ज़रा ऐड बिल्ड स्टेप में, बिकॉज आई थिंक कुछ फेल तो नहीं हुआ ना तुम्हारा. इसको डिलीट करो. डिलीट करके देखो क्या क्या और है. अच्छा, एग्जीक्यूट विंडोज़ बैच, एग्जीक्यूट शेल, नो. इन्वोक ग्रेडल स्क्रिप्ट. ओके, इन्वोक ग्रेडल स्क्रिप्ट इज़ फाइन. Invoke top level maven target is also fine. Okay, invoke gradle script करो. ग्रेड डिफ़ॉल्ट रहने दो. टास्क इज क्लीन टेस्ट. ओके, यूज़ ग्रेडल रैपर करो. इसको क्लिक ऑन यूज़ ग्रेडल रैपर. हाँ, ग्रेडल रैपर लोकेशन is project location, right? So only put a slash. Okay. And task is clean and test. Clean space test. Okay. रैपर लोकेशन जो है उसको हटा दो. बेस्ट है, हटा दो. हाँ, हटा दो. ठीक है. नाउ अप्लाई एंड सेव. नाउ बिल्ड नाउ. मुझे देखना है एक्चुअली कहाँ पे, मतलब वो लोकेट कहाँ पे कर रहा है. जाओ अभी उस बिल्ड में जो रन हो रहा है, जाओ वहाँ पे. कंसोल आउटपुट. हाँ, डाउनलोड हो रहा है, मतलब हिट किया है प्रोजेक्ट को. लेट्स सी.
Okay, you got it right. Wait, wait, I'll guide you, no problem. फर्स्ट फर्स्ट जॉब, फर्स्ट बिल्ड थोड़ा सा टाइम लेता है इसका, ठीक है। तो लेट इट बी, ओके, क्लोज हो कुछ मत करो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, रूपाली, कैन यू शेयर योर स्क्रीन? अनशेयर करो, जस्ट इन्फॉर्म मी, ओके। हाँ, राइट। अभी एक पर्सनल टोकन यू यू हैव टू जनरेट, ओके। सो वो कॉर्नर, गो टू दैट कॉर्नर, यूज़र नेम, राइट कॉर्नर, राइट टॉप कॉर्नर, वहाँ पे क्लिक करो। क्लिक ऑन सेटिंग्स। नाउ क्लिक ऑन डेवलपर सेटिंग्स, नीचे आ जाओ, लेफ्ट पेन में दिखेगा डेवलपर सेटिंग्स। नीचे आ जाओ और थोड़ा सा, क्लिक ऑन पर्सनल एक्सेस टोकन। क्लिक ऑन पर्सनल एक्सेस टोकन। अरे लेफ्ट साइड में है, वो टोकन क्लासिक में जाओ। जनरेट न्यू टोकन, जनरेट क्लासिक, सेकेंड वाला, क्लिक ऑन सेकेंड वन। पासवर्ड डालो, गिटहब का पासवर्ड। क्लिक ऑन दैट पासवर्ड, ओके। नथिंग इज, क्या फॉरवर्ड नहीं है क्या पासवर्ड? वेनिला कुछ आगे बढ़ा क्या? हाँ, कुछ टेक्स्ट डाल दो आप, कुछ नोट डालो, जस्ट व्हाट इज़ द टोकन फॉर। हाँ, क्लिक ऑन रेपो, जस्ट रेपो जो चेक बॉक्स है उसको सिलेक्ट करो, राइट। नाउ जनरेट, नीचे आ जाओ, नीचे आके जनरेट करो, जनरेट टोकन। ये टोकन को कॉपी करो,
बाजू में वैसे नहीं, बाजू में जो ये है आइकन है उससे कॉपी करना पड़ेगा आपको। देखो, करेक्ट, क्लिक ऑन दैट। हाँ, ये सेव करके रखो कहीं पे, नोट पैड, कुछ भी चलेगा। ओके, नाउ गो टू गिट जेनकिंस। क्लिक ऑन न्यू आइटम, लेफ्ट में देखो। ओके, जस्ट पुट अ नेम। कुछ अच्छा दो ना, मीनिंगफुल है कि जॉब का नाम दो, फर्स्ट जॉब काइंड ऑफ थिंग, माय फर्स्ट जॉब। नाउ क्लिक ऑन फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट, करेक्ट, क्लिक ऑन ओके। दो बार क्लिक किया आपने, बैक जाओ। हाँ, वो ऑल में क्लिक क्लिक करो, ऑल। हाँ, ऑल में क्लिक करो ना, वो जो देखो ऑल ब्रेड क्रम में है, ऑल। हाँ, ये फर्स्ट, माई फर्स्ट, उसमें दो बार क्लिक कर दिया आपने। इस माई फर्स्ट जॉब इसमें जाओ। क्लिक ऑन कॉन्फ़िगर। वाई, ओ व्हाट इज, हाँ हाँ, क्यों हुआ है देखो ना, लॉग देखो, चेक द लॉग। दैट इज फाइन, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। Okay, I think Rupali's everything is stuck. You can share your screen, Vanilla. Rupali, your screen is stuck, right? Okay. Execution failed. There are failing. See report at this is ज़रूरत नहीं है. अच्छा, टेस्ट रूट नल, सब्सिक्वेंट, अच्छा, compilation no source, process resources no source, classes up to date, compile test java, task test classes, okay, cucumber test suite, cucumbers by state logging, starter, cucumber test suite, positive login scenario failed, java lang assertion error at home steps 25, होम स्टेप्स 25। देखो ज़रा हमारे कोड बेस में जाके देखो वो क्या है। नहीं, इसमें देखो ना अपना, it is, this is assertion failure, it is saying src, go to src, test java,
लॉगिन होम पेज ऐसा कुछ है, दिया है ना होम पेज कुछ तो, होम पेज उसमें किया लाइन नंबर 25। प्राइवेट वेब एलिमेंट फैसेट एरर मैसेज 25 में ही दिया है ना, देखो एक बार जाके। अच्छा होम स्टेप्स है, हाँ हाँ होम स्टेप्स में जाओ, स्टेप क्लास में जाओ, हाँ नहीं नहीं स्टेप डेफिनेशन, होम स्टेप क्लास होगा ना, होम स्टेप क्लास। गो टू स्टेप्स, वो देखो स्टेप्स है, देखो नीचे उसके नीचे, हाँ वहाँ पे होम स्टेप्स लाइन नंबर 25। द एरर मैसेज नॉट डिस्प्लेड, मतलब तुम्हारा एक जो टेस्ट है वो एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है, बट यू आर नॉट पासिंग एनी टेस्ट डेटा, राइट, वी आर नॉट पासिंग द टेस्ट डेटा, दैट इज वाई इट इज फेलिंग, दैट इज वाई इट इज फेलिंग। No problem. You got it right. How to create jobs. Normally we do it using shell thing, right? Okay. हाँ execute shell. ओके एग्जीक्यूट शेल में डायरेक्टली वो ग्रेडल डब्ल्यू क्लीन टेस्ट, उसके बाद -p तुम्हारा टेस्ट डेटा जो है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड यू हैव टू पुट, ओके जो भी अपने पास है वो, ठीक है, दैट विल बी द करेक्ट प्रोसेस, ओके। बट राइट नाउ योर शेल इज नॉट वर्किंग बिकॉज यू हैव deployed the things in your windows, but we'll see, we'll check, okay, how the things. Rupali, yeah, हाँ नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, गो क्लिक ऑन गिट, वो जो सोर्स है ना, सोर्स कोड, थोड़ा सा ऊपर जाओ, थोड़ा सा ऊपर जाओ, हाँ ये देखो सोर्स कोड मैनेजमेंट, यहाँ पे वो क्रेडेंशियल पहले ऐड कर लो, क्रेडेंशियल्स पहले ऐड कर लो, क्रेडेंशियल्स, क्लिक ऑन क्रेडेंशियल्स, देखो ना नीचे है ऐड, देखो प्लस ऐड, ऐड, क्लिक ऑन ऐड करना है, क्रेडेंशियल्स ऐड करना है हमें, जेनकिंस में क्लिक करो, क्लिक ऑन जेनकिंस, हाँ तो हियर यूज़र नेम इज पासवर्ड, दैट इज़ फाइन। यहाँ पे आपका गिट यूज़र नेम डालो, यूज़र नेम में आपका गिट यूज़र नेम डालो, गलती मत करो, हाँ सिलेक्ट करो उसको, यूज़र नेम विथ पासवर्ड सिलेक्ट करो, हाँ उसको सिलेक्ट करो, एंड यूज़र नेम में वो छोड़ दो, ग्लोबल रहने दो, यूज़र नेम में आपका जो यूज़र नेम है उसको गिट यूज़र नेम उसको डालो, गिट हब का जो यूज़र नेम है, चाहे तो एक बार चेक कर लो गिट हब में जाके, नहीं ये नहीं है, देख लो ये है कि नहीं देख लो, अदरवाइज गलत हो जाएगा, हाँ @ नहीं होता है नॉर्मली, जाओ ना गिटहब में जाओ, गिटहब में जाके चेक करो, हाँ वो राइट साइड कॉर्नर में, अपर कॉर्नर में क्लिक करके देख लो, रूल्स कैसे, वो देखो ग्रीन कलर का जो गोल है, अच्छा हाँ वो, हाँ उसमें क्लिक करो,
हाँ, अभी पासवर्ड में जो टोकन कॉपी किया वो टोकन को डालो. क्लिक ऑन ऐड. नीचे आ जाओ, नीचे ऐड ऑप्शन है, क्लिक ऑन ऐड. हाँ, अभी गिटहब में जाके ये जो है इसका रिपोजिटरी यूआरएल कॉपी करो HTTPS का. वो अगस्त बैच सेरेनिटी में क्लिक करो. अगस्त बैच सेरेनिटी में क्लिक करो. लेफ्ट साइड में है, देखो रेपो किधर रहता है, लेफ्ट साइड में. हाँ, उसमें क्लिक करो. कोड में जाओ, ग्रीन कलर का कोड बटन में जाओ. हाँ, अभी इसको वैसे कॉपी नहीं करते, मैंने बोला ना, आइकन से कॉपी करना होता है हमेशा. हाँ, रिपोजिटरी यूआरएल में वो डाल दो. राइट, बाहर क्लिक करो. वो रूपाली रूपाली 1978 को सिलेक्ट करो. राइट. हाँ, थोड़ा सा रुक जाओ. हाँ, हो गया. नाउ कम कम बिलो. अच्छा, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, अगेन स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन. नहीं चाहिए वो सब, स्क्रॉल डाउन करो. रूपाली, हेलो. आई थिंक अगेन वेंट ऑफ. हेलो रूपाली. हाँ, ठीक है, ठीक है. अभी वो बिल्ड स्टेप में, ऐड बिल्ड स्टेप पे क्लिक करो. क्लिक ऑन ऐड बिल्ड स्टेप. हाँ, यहाँ पे एग्जीक्यूट विंडोज बैच कमांड सिलेक्ट करो ज़रा. सिलेक्ट इट एंड हियर put dot slash gradle w हाँ, space clean space test. Click on apply and save. नहीं 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 नहीं, ग्रेडल नॉर्मली जो हम लोग करते हैं ना वही. राइट. हाँ, अप्लाई एंड सेव. ओके, नाउ क्लिक ऑन बिल्ड नाउ. लेफ्ट पेन में है, देखो लेफ्ट ऑप्शन में जाओ. हाँ, बिल्ड. वेट. जाओ उस बिल्ड में जाओ, वन में जो रन हो रहा है वो रनिंग, दैट इज रनिंग. गो टू दैट बिल्ड. यस. हाँ, क्लिक करो. हाँ, इसमें वो कंसोल आउटपुट में जाओ. लेट्स सी इफ इट इज रनिंग. नीचे आओ ना थोड़ा सा. हाँ, इट इज रनिंग.
Starting Gradle daemon. Your thing also failed because that username password we have not passed yet. Uh, excuse me. Yeah, vanilla. रूपाली आपका अनशेयर करो वैनिला को देखता हूँ थोड़ा सा फिर आई कम टू यू वैनिला शेयर योर स्क्रीन ओके ओके अभी जेनकिंस में जाओ फिर से गो टू जेनकिंस कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर में जाओ वो बिल्ड स्टेप जो है उसको डिलीट करके ऐड बिल्ड स्टेप वो विंडोज़ वाला जो सिलेक्ट वो एग्जीक्यूट विंडोज़ बैच कमेंट हाँ यहाँ पे gradle w स्पेस क्लीन स्पेस टेस्ट स्पेस माइनस p कैपिटल P माइनस P फॉर पूना P फॉर पूना पुणे हाँ माइनस P यूज़र नेम स्पेस नहीं एक साथ माइनस P यूज़र नेम यू स्मॉल लेटर ऑल स्मॉल लेटर ओके यूज़र नेम इक्वल टू गिव योर फोन नंबर ओके अगेन माइनस P स्पेस माइनस P पासवर्ड equal to just do something write some password let's say password random password okay fine now apply and save and build now go to that job this is running on your local okay but by default it is taking the headless mode of the browser that is why you are not seeing the browser instance but it is as you have deployed your Jenkins in your local and you are not using any third I mean any remote desktop to run it or rather Selenium grid to run it so it is running on your desktop okay but as it is Serenity framework already taken it as as a headless thing okay
build success. That means your I mean test all ran properly, right? You can go to that index, let's say उस जॉब में जाओ, वर्क स्पेस में जाओ, कोई देखो वर्क स्पेस जनरेट हुआ है, देखो ना चेंजेस के बाद वर्क स्पेस आया है। हाँ, इसमें क्लिक करो। हाँ, यहाँ पे देखो टारगेट सेरेनिटी रिपोर्ट्स में जाओ, इसमें क्लिक करो, क्लिक ऑन इट। हाँ, आएगा आएगा आएगा। लोकली डिप्लॉयड फिर भी इतना स्लो चल रहा है, देखो। यहाँ पे देखो index.html generate, it should generate some index.html। इसको क्लिक करो, टेस्ट रिजल्ट्स में जाओ, क्लिक ऑन टेस्ट रिजल्ट्स, नहीं आ रहा है। Okay, that's not a problem. I mean, Jenkins job is fine. Okay, Jenkins job is fine. I mean, एक ही सिनेरियो था जो हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे थे, राइट? नंबर ऑफ सिनेरियो वन एंड दैट इज वन इज एग्जीक्यूटेड, फाइन, इट्स फाइन आई थिंक। टेस्ट रिजल्ट्स, राइट। रिक्वायरमेंट्स में जाओ, रिक्वायरमेंट्स और फीचर्स में जाओ, क्लिक ऑन फीचर्स। कोई भी फीचर टेस्ट नहीं हुआ, कोई भी फीचर टेस्ट नहीं हुआ है। You have to check the code. Okay, number of scenario, okay, रिक्वायरमेंट्स भी कुछ नहीं आ रहा है, राइट? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है रिक्वायर, मतलब वो एग्जीक्यूट हुआ नहीं कि क्या हुआ। और एक बार इसका जो जेनकिंस का जो कंसोल है और एक बार दिखाओ ना। वो 5 नंबर 5 बिल्ड में जाओ, कंसोल आउटपुट एग्रीगेट डायरेक्टली, वो टेस्ट कौन सा टेस्ट तो नहीं हुआ एक्चुअली, डायरेक्टली वो एग्रीगेट करने लगा है। रिक्वायरमेंट बेस्ड डायरेक्टरी इज नल। थोड़ा रुक जाओ, हाँ थोड़ा रुक जाओ, अगेन रीरन करो थोड़ी देर के बाद, क्योंकि सिंक होने में कभी कभी टाइम लेता है। और अदरवाइज एक काम कर सकते हो, डॉट स्लैश की जगह सिर्फ ग्रेडल डब्ल्यू क्लीन टेस्ट करके एक बार देख सकते हो।
फिर पता चलेगा कि वहाँ पे ग्रेडल डब्ल्यू फाइल है कि नहीं। कॉन्फ़िगर में जाके only gradle w clean test, apply and save and build now. अच्छा, तब तक एक बार वर्क स्पेस दिखाओ ना वैनिला। Go to your workspace, just want to, okay, this is my first Jenkins job, right? Okay, and gradle w inside it. So first Jenkins job ये आएगा, right? सो वी हैव टू फर्स्ट गो टू सी डी करके मुझे जाना पड़ेगा फर्स्ट जेनकिंस जॉब में, देन देयर वी हैव टू रन इट, करेक्ट। और हाँ, देखते हैं रुको। देखो अभी इसमें जाओ, नंबर 6 बिल्ड में जाओ, कंसोल आउटपुट। हाँ, रिक्वायरमेंट डायरेक्टरी नल, नल मिल रहा है, राइट। कॉन्फ़िगर में जाओ, ये जो ग्रेडल डब्ल्यू कर रहे हो ना, वो फर्स्ट प्रोजेक्ट का नाम दो, फर्स्ट वट एवर दैट फर्स्ट, नहीं वैसा नहीं, शुरू करो। फर्स्ट जेनकिंस जो भी डिफरेंट, वेट जस्ट अ मिनट, मुझे देखने दो एक बार। वो गिट में था एंड देन लेट मी शेयर माई स्क्रीन, ओके। देखते हैं मेरे पास होता है कि नहीं, देखते हैं। See, let me create a new job here, okay? So let's see, this is Serenity job, okay? Serenity job, and it would be freestyle, okay? डिस्क्रिप्शन में क्लिक किया मैंने, कुछ लेट्स से एनीथिंग, राइट, सेरेनिटी डेमो। यहाँ पे सब कुछ ठीक है। वी हैव टू क्लिक ऑन गिट में जाके इसका जो लेट्स से SSH का ही दे के देखता हूँ। वी हैव टू पुट दिस वन SSH एंड हाँ, SSH मेरे लिए काम कर रहा है, तो तुम्हारे लिए भी काम करेगा शायद से, बट लेट्स सी। रिपोजिटरी एंड दिस इज़ माय बिल्ड स्टेप। ऐड बिल्ड स्टेप में जाके मैं एग्जीक्यूट शेल, मेरा मैक है इसीलिए एग्जीक्यूट शेल कर रहा हूँ, ओके। डॉट ग्रेडल w क्लीन टेस्ट यूज़र नेम इक्वल टू लेट्स से password equal to anything, right? Password,
Okay, now I am clicking on apply and save. Okay, now clicking on build now. Let's see what happens. Console output. ये देखो मेरा टेस्ट एग्जीक्यूट हो रहा है. सी माई टेस्ट इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड. राइट, फर्स्ट टेस्ट is passed. Okay, so you're also, I think, getting executed. Okay, but you are not getting the report. You are getting the same thing, right? But test case is getting executed. Okay, let me check dot jenkins workspace. इसमें क्या आता है? Open in a new tab. Okay, okay, रुको just a minute. Let's publish the report. ठीक है, लेट्स पब्लिश द रिपोर्ट. कॉन्फ़िगर में जाके पोस्ट बिल्ड ऐड पोस्ट बिल्ड एक्शन. ओके, यहाँ पे देखते हैं पब्लिश पब्लिश जावा डॉक गिट पब्लिशर नो archive build other project no publish JUnit test result report record fingerprint email notification we can do, but for that we have to have that SMP I mean SMTP configuration. So वो Gmail से नहीं होता है. ठीक है, we do not have that in the Gmail, but in your project you can do it, because the DevOps guy will provide that SMTP information. यहाँ पे एक पब्लिश द रिपोर्ट करके होता था. लेट मी चेक. पब्लिश और कुछ पब्लिश है क्या? ईमेल नोटिफिकेशन. अच्छा, गिट पब्लिशर में क्या है? अच्छा, मर्ज रिजल्ट फोर्स नोट्स नहीं, इसमें नहीं. exit code to set build unstable no. Publish JUnit test result report. Fine. Okay, so file set includes settings that specify raw XML reports such as my project target.xml baseline of this. The workspace file set is the workspace root no. एक काम कर सकते हो क्या? कैन यू प्लीज़ गिव मी दैट index.html का जो पाथ है वो जस्ट टारगेट से दे दो. हाँ, टारगेट देन व्हाट? टारगेट जस्ट बोलो, मैं करता हूँ. हाँ, और ये प्रोजेक्ट का नाम जो है, हमारे पास प्रोजेक्ट का जो नाम है वो देख लो. नहीं नहीं, टारगेट से पहले क्या है? हाँ, पिंग कर दो, चलेगा. हाउ टू पब्लिश
HTML report Jenkins. Standalone job. Publishing HTML report pipeline. Build. HTML publisher plugin चाहिए. Wait. Go to Jenkins and go to dashboard. Let's say this leave. Go to dashboard. Dashboard में जाओ. Manage Jenkins करो. वहाँ पे plugins में click करो. And here some search HTML. कुछ आ रहा है क्या? HTML. Okay, this is updates, right? Available plugin. HTML publisher. See, HTML publisher is there. Check it and install. Okay, installations are completed. Now go to dashboard again and go to, okay, go to your Serenity job, configure, build step action में कुछ HTML, हाँ, publish HTML report. Publish HTML report में add report. Okay, the index page is HTML. The directory to archive, a directory to archive हमें देना पड़ेगा, right? Target, then what? पिंग किया क्या? ये टारगेट सेरेनिटी रिपोर्ट्स यहाँ से ले लेते हैं. Control V. Okay. इंडेक्स पेज पब्लिशिंग ऑप्शन क्या है? ऑलवेज लिंक टू लास्ट बिल्ड, अलाउ मिसिंग रिपोर्ट्स. ओके, always link to last bit, include files. Okay, apply, save. Let's see if it is publishing the latest thing, right? So test is getting executed, you can see. So in your case also it is getting executed, I am sure. पब्लिश होगा कहीं पे, where it is getting published. कंसोल आउटपुट में देखते हैं. HTML publisher, recursive using recursive thread, HTML reports, वर्कस्पेस, सेरेनिटी जॉब के बाद आता है टारगेट, राइट? सेरेनिटी जॉब के बाद आता है टारगेट एंड सेरेनिटी रिपोर्ट्स. ओके, एक्सरसाइज डॉट जेनकिंस जॉब, सेरेनिटी जॉब, HTML रिपोर्ट्स. कहाँ गया है रिपोर्ट? HTML 20 रिपोर्ट यहाँ पे कहाँ पे है? डॉट जेनकिंस जॉब, सेरेनिटी जॉब, HTML रिपोर्ट्स एंड HTML रिपोर्ट. ओके, एक फोल्डर क्रिएट किया यहाँ पे. ये,
हाँ ये देखो, in the Serenity job itself you are getting this HTML report. Okay, test result में ये test result somehow it's not editable. ये Jenkins में कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है. See, something is getting, features are getting, everything is correct. Okay, everything is correct only. These features are getting executed. This test result is not getting coming up. Okay, so it's okay. I mean, it's not our issue, it's Jenkins issue basically. And we are using open source Jenkins, right? That is also a problem. ओके, क्या करूँ अभी? हाँ, तो सेम थिंग, रूपाली, वैनिला, जस्ट शेयर योर स्क्रीन. कॉन्फ़िगर में अच्छा, वो प्लगइन डाउनलोड किया क्या? हाँ, डॉट ग्रेडल डब्ल्यू वट एवर, तुम्हारा टेस्ट एग्जीक्यूट हो रहा है. हाँ, टारगेट सेरेनिटी रिपोर्ट्स फाइन, इंडेक्स HTML फाइन, अप्लाई सेव, अप्लाई एंड सेव. नाउ यू build now, click on build now, because your things are executing, don't worry, because same log I am also getting, right? ओके, तो ये हो जाने के बाद ये फर्स्ट जेनकिंस जॉब में तुम्हें वो HTML रिपोर्ट मिल जाएगा, वो देख लो. रूपाली, कैन यू शेयर योर स्क्रीन? तो ये तो हाँ फेल होगा, क्योंकि यू हैव नॉट पास्ड द यूज़र नेम एंड पासवर्ड. ओके, एसर्शन फेलियर तो होगा ही, आएंगे. बिल्ड फेल्ड विद एन एक्सेप्शन, रिक्वायरमेंट डायरेक्टरी नॉट. ऊपर जाओ, थोड़ा सा ऊपर जाओ, वेट थोड़ा सा नीचे. हाँ, ये एसर्शन वो सेम ही है. तो एक काम करो, इसका कॉन्फ़िगर में जाओ, गो टू माई फर्स्ट जॉब, डायरेक्टली गो टू माई फर्स्ट जॉब. ऊपर देखो, हाँ वहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करके कॉन्फ़िगर में जाओ. हाँ, कॉन्फ़िगर में जाओ. आपका मशीन स्लो हो गया बहुत, but that is fine. I mean, you learned something new, right? That is fine. I mean, if you want, you can uninstall it later. Okay, uninstall the Jenkins later. Anyway, I am recording the session, so everything will be recorded. Hello, Rupali. Rupali, are you? Yes, now. Okay. No, that is fine. Go to Jenkins again. हाँ, तो नीचे आ जाओ थोड़ा सा, वो बिल्ड जहाँ पे लिखा था हम लोगों ने, बिल्ड सेक्शन में, बिल्ड स्टेप्स, और भी नीचे, एकदम नीचे.
हाँ, यहाँ पे स्पेस माइनस कैपिटल पी स्पेस, नहीं वहाँ पे नहीं, वहाँ पे हाँ, कैपिटल पी, यूज़र नेम ऑल स्मॉल, इक्वल टू कोई भी एक फ़ोन नंबर डाल दो, वैलिड फ़ोन नंबर 10 डिजिट, स्पेस माइनस पी हाँ, पासवर्ड इक्वल टू some random password you put. Okay, now apply and save. आपने वो नहीं किया ना, वो जो मैंने प्लगइन डाउनलोड करने बोला था? हाँ, गो टू डैशबोर्ड, देखो ऊपर डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में जाओ, वहाँ पे मैनेज जेनकिंस करो, मैनेज, क्लिक ऑन मैनेज जेनकिंस. You can, some plugins could not be due to unsatisfied, okay, unsatisfied dependencies. Fine. प्लगइन में कुछ प्रॉब्लम है. क्लिक ऑन करेक्ट, क्लिक ऑन करेक्ट. ये होता है, आई मीन सी, दिस इज, आई मीन वी आर यूजिंग आवर ओन लैपटॉप, राइट, एंड दैट लैपटॉप इज नॉट रिलायबल. Okay, and also we are using, we are using our these things, free open source software, so these things will happen. But all, I mean, keeping all these negative points, you have to learn how to create Jenkins job, how to create pipeline and okay, that is a challenge. Okay, click on available plugins. यहाँ पे सर्च करो HTML. हाँ, वो HTML पब्लिशर, उसको चेक करो, चेक बॉक्स पे चेक करो एंड क्लिक ऑन इंस्टॉल. सब हो गया ना सक्सेस. नीचे आ जाओ. पाइपलाइन बिल्ड स्टेप. ओके, पाइपलाइन आप नहीं कर सकते हो आपके इसमें, बट आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट पाइपलाइन, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, नीचे आ जाओ और थोड़ा सा HTML पब्लिशर हुआ है कि नहीं वो देखना है मुझे. हाँ, हो गया हो गया हो गया. नाउ गो टू डैशबोर्ड अगेन एंड गो टू दैट जॉब, go to your job, click on configure. एकदम नीचे. अच्छा, आई थिंक अगेन नेटवर्क इज क्रिएटिंग इशू. हाँ, मेरे पास भी वही है. हाँ, फाइन, उसमें उतना ये करने की ज़रूरत नहीं है. इट्स जेनकिंस इशू. माई जेनकिंस इज डिफरेंट. आई मीन in my case also, it's not, test result is not showing, right? We can't do anything on that. क्या हो गया रूपाली?
Yeah, just to share your screen. Okay. uh, Scroll down to below, एकदम नीचे आ जाओ, नीचे नीचे पोस्ट बिल्ड एक्शन में जाओ, पोस्ट बिल्ड ऐड पोस्ट बिल्ड एक्शन, क्लिक ऑन ऐड पोस्ट बिल्ड एक्शन, यहाँ पे पब्लिश एच टी एम एल रिपोर्ट्स, क्लिक ऑन पब्लिश एच टी एम एल रिपोर्ट्स। ओके, रिपोर्ट्स में उसमें ऐड करो, क्लिक ऑन ऐड। रिपोर्ट्स में देखो, रिपोर्ट्स के नीचे ऐड बटन है, हाँ उसमें क्लिक करो। हाँ, एच टी एम एल डायरेक्टरी आर्काइव करो, टारगेट। हाँ मैं देता हूँ, देखो यहाँ पे दिया है इसने, मैं भेजता हूँ फिर से, यहाँ से लेके पुट कर दो। हाँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, एच टी एम एल तो अप्लाई सेव कर दो, अप्लाई एंड सेव एंड देन बिल्ड नाउ, अप्लाई सेव, क्लिक ऑन बिल्ड नाउ। ओके, इसके बाद विल सी हाउ टू चेक दैट, आई मीन हाउ टू क्रिएट पाइपलाइन। थोड़ा 10 मिनट टाइम दे दो, हाँ, और ये मैं और खींचना नहीं चाहता हूँ। जेनकिंस फाइल को कॉपी करना पड़ेगा। सक्सेसफुल, राइट, इट्स सक्सेसफुल, फाइन। नाउ आप एक बार इसमें यहाँ पे आओ, डायरेक्टली माई फर्स्ट जेनकिंस, ये एक बार पेज रिफ्रेश करो, रिफ्रेश योर पेज। हाँ देखो, एच टी एम एल रिपोर्ट आया है, एच टी एम एल रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपको एच टी एम एल रिपोर्ट दिखेगा, हमारा जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का रिपोर्ट है सेरेनिटी। हाँ, तो ये बराबर से आ नहीं रहा है, ये जेनकिंस का प्रॉब्लम है, सर्वर, जेनकिंस सर्वर का प्रॉब्लम है। बट यू अंडरस्टूड राइट हाउ टू क्रिएट जेनकिंस जॉब नाउ क्विकली। हाँ हाँ, वो हो रहा है, मेरे पास भी नहीं आ रहा है एक्चुअली, but it is not our problem, we have published the html things. Okay, okay, fine. Let me quickly share my screen. Okay, and let me share, give you the information about Jenkins pipeline.
नाउ ये देखो, यहाँ पे हम लोग क्या किए, what are the steps we followed. The steps we followed is, first we have fetched the code from this particular what, this particular repository, right, using this credential, correct. Then वर्कस्पेस में हम लोग वो मास्टर ब्रांच में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मतलब जस्ट यूजिंग द मास्टर ब्रांच कोड वी आर एग्जीक्यूटिंग इट यूजिंग दिस बिल्ड स्टेप. Now the same thing we can do using directly, we can pass it through code, okay, directly the job will be created, okay. So there are two options, either you can create a Jenkins file in your code base, or you can create a Jenkins file here. So let me create a Jenkins file here. I don't want to go to that code again, okay. So let me do it. So this is my Serenity pipeline, okay, Serenity pipeline, and you have to select this pipeline, okay, you have to select pipeline. Now click on OK, okay. Now what you have to do, it's pipeline, right, this pipeline script, okay. So try sample pipeline script, okay. Let's say here just select a hello world or something like that, it's just normal. So agent means what is agent? Agent means Jenkins agent. Suppose Jenkins has some sub agents, okay, where your code will be run, but in our case we do not have any agent, we did not create any agent, I don't have that resources simply. So then we have the stages, okay. So in our first stage we will have this code fetching, right, the first stage is code fetching, this name can be anything, code fetching. Now स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे स्टेप में देखो, ये जो चेकआउट है यहाँ पे रहेगा ऐसा, दिस इज द स्टेज, ओके. इसका मतलब क्या है, दिस इज माई कोड फेच, ओके. नाउ स्टेप इज गेट ये जो है इसको मैं फेच कर रहा हूँ, करेक्ट, ये जो रिपोजिटरी है. सो आवर रिपोजिटरी इज it's this one, right, our repository is, go to this code and ssh, copy this ssh version and put here, simple, okay. Your GitHub repository you have to put. Now code fetch ho gaya. Now what else you have to do, then you have to execute it, right, you have to execute it. So we have to build and test. This is my build and test. This is my build and test, okay. अब build and test में क्या करेंगे हम लोग, so in your case it is, in my case it should be sh, okay, sh, and sh में हम लोग directly dot slash gradle w clean test minus p username equal to and minus p password equal to let's say password, right. So this is my stage, okay. So 1 2 3 1 okay, password 1 2 3. So this is how we create pipeline. So we are creating just, this is a groovy code, by the way, okay, this is a groovy code. So using this groovy code we are passing these stages, okay. Now suppose this is not the end, right. Suppose you have, I just discussed, first you have to deploy, okay. Suppose there is a stage called deployment, okay. Let's say there is a stage called deployment.
let's say this one. This is my deployment thing. So I have one stage inside stages. I have one stage called deployment, and here we will use some anything. I mean, sh let's say echo Java. Okay, echo Java, or let's say uh, Java version. ये मैं this I am giving just an example. Deployment means actual deployment. So once the deployment stage will be successful, then code fetching will be executed. Once the code fetching is successful, then only the build and test will be triggered. So this is the way of execution of any pipeline. Okay, of any pipeline. The same thing you can use in through the code also, throughout I mean from code also. ठीक है, तो कैसे होता है, मेरे पास देखो एक पड़ा है एक चीज़, मतलब एक रिपोजिटरी है जहाँ पे जेनकिंस फाइल है. दिस वन, तो जस्ट लास्ट बैच को ही मैंने दिखाया था. सी, मैं जेनकिंस फाइल को कोड बेस में पास कर रहा हूँ. ओके, जेनकिंस फाइल को आई एम पासिंग इन द कोड इटसेल्फ. हाँ, and then this thing will be executed, I mean this thing will be fetched here. Go to Jenkins, suppose let me create this pipeline. Suppose this is my July batch, and let me take this. This is my Jenkins, right? Okay, so here we'll pipeline script from source code management. Okay, pipeline will put pipeline script from source code management. So go there. Okay, SCM is what? SCM is Git, right? Our source code management is Git. Now you have to put the Git URL. Okay, and you have to put the password credential here, right? हो गया. Now क्या ये the master, I mean specific branch is master, right? And the script path is Jenkins file. See, this is situated in the project file itself. Okay, a project directory itself. And Jenkins file का नाम क्या है ये? J small and F capital. So we have to pass the same way. J should be small and F should be capital. Okay, F should be capital. Now if we just apply and save and just build now, click on build now, it should execute that pipeline. See, it is executing. तीन चार टेस्ट केसेस है शायद से, so those are all executing. So using pipeline and using standalone, both we have learned how to do this. Okay, so this is successful. If you go there and go to this pipeline overview, right? Pipeline overview, if you see start, then check out SCM, then deployment,
then checkout, then build and test, and end. All these stages are passed. If deployment is failed, suppose deployment is failed, then you will not be able to go to checkout. This is the beauty of pipeline. This is the pipeline view, by the way. Okay, if you are using the organization level, I mean the paid version of Jenkins, you will get a good view. Okay, there is a blue ocean view. So this is how we do everything, and I am giving you the Jenkins file pro forma, or rather, you can use the same file in your job also. Part by part I am sending. Okay, just keep it, I mean just copy and paste it somewhere. This is the first line, then we'll have another stage. This is the second, and इसके बाद दो just closing braces. इसको ले लो, इसको लेके जब भी जब भी जॉब करोगे, मतलब ऑफिस में जब भी ज़रूरत पड़ेगी, यू कैन यूज़ द सेम सिंटैक्स. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप. क्लियर? Vanilla, is it clear? Okay, fine. So I am stopping the recording. So if you have any question, you can ask.